Hey guys, I'm Sourav and in today's video, I'm going to draw still life drawing. So let's begin. First of all, let's make the outline part. And guys, if you want specific video on outline, then comment down below. I will definitely make a video on this topic. By the way, I am using Staedtler Lead holder and only HB lead in it from Staedtler brand on Fabriano Academia 120 GSM paper. Purchase your tracks today. Guys, as you know, मैं डार्कर एरियाज को पहले कवर करता हूँ. दिस इज माई कॉमन स्ट्रेटेजी फॉर एवरी पेंसिल ड्राइंग. ये आपको भी ट्राई करना चाहिए. इससे टोनल वैल्यूज़ को समझने में हेल्प मिलती है और ड्राइंग भी सिंपल लगने लगती है. आई मीन कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं. आप भी टोन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करा करो. डार्कर टू लाइटर वैल्यूज़. गाइस, आपके पास जो रेफरेंस है उसके सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड करो. इस ड्राइंग में मैंने भी यही किया है. मैंने वाश को प्राइमरी प्रेफरेंस दी है और इसके नीचे रखे फैब्रिक को सेकेंडरी दूंगा एंड बचे हुए बाकी चीजों को लाइक टेबल टॉप एंड बैकग्राउंड को थर्ड. वैसे आप एंड में देख ही लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ. गाइस, मैं इनकी डिटेलिंग भी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही करूंगा. एज यू कैन सी, मैंने वाश में जितना हो सके उतनी अच्छे से डिटेलिंग की है एंड फैब्रिक में वाश के कंपैरिजन थोड़ी कम डिटेलिंग कर रहा हूँ एंड बाकी चीजों में नेग्लिजिबल डिटेल्स ऐड करूंगा. बस इनके बेसिक फीचर्स दिखने चाहिए. क्या आपको पता है ऐसा करने के पीछे मेरा मेन रीजन क्या है? बताता हूँ. इससे व्यूअर्स का सारा फोकस खुद पे खुद इसके मेन सब्जेक्ट पे जाएगा, जिससे आपका आर्टवर्क देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. गाइस, ये टेक्निक हर जगह एप्लीकेबल होती है. कीप इन माइंड, ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स आपके फाइनल आउटकम में बड़े बड़े डिफरेंसेस ला सकते हैं. So guys, the artwork has been completed. Now enjoy the reveal. Boom. So I hope you guys enjoyed this video a lot. अगर हाँ तो लाइक दबा दो यार. It will motivate me. और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो. इसी बहाने वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना. इससे हमारा कॉन्टैक्ट बना रहेगा.